said, every big business starts with a small idea. It's what you do with it that counts. Good morning to one and all present here. With great honor and enthusiasm, we, KAUSHAL and Cheryl, stand before you to welcome our distinguished guests, esteemed faculty, and enthusiastic participants of Idea Force 25. This event is a catalyst for igniting the entrepreneurial spirit within all of us. Together, we embark on a journey of creativity and innovation, fostering a collaborative environment where transformative ideas can take shape and thrive. Whether you're an experienced entrepreneur or taking your first steps into the startup world, Idea Force 25 promises to be a game changing experience filled with learning, collaboration, and limitless opportunities. Over the course of 3 days, this event will offer valuable networking opportunities, insightful knowledge sharing, and potential avenues for collaboration. So gear up to unleash your creativity, tackle challenges head on, and dream bigger than ever before. As we embark on this exciting journey of Idea Force 25, we have an insightful lineup of sessions designed to inspire and empower budding entrepreneurs and guide you through every aspect of the business ecosystem. CA Umakant, a distinguished chartered accountant with over 30 years of experience, will be leading a session on legal and ethical foundations for startup. A fellow member of ICAI and a law graduate, he has previously served as the chairman of ICAI Chandigarh and is widely recognized as a thought leader in taxation, financial management, and corporate advisory. His expertise and insights will provide invaluable guidance on navigating the legal and ethical dimensions of the business world. Let's extend a warm welcome to Mr. Umakant Mehta. Good morning. Morning, sir. With due respect to Mr. J.K. Sharma, the court-wide ICC, my big brother, C.A. Baldev Ragji, who is basically the person I have learned a lot from him. He is force behind why I am standing over here. So he is basically the person who has brought me to go for all these things. So you all are going for startups. So you are going to be entrepreneurs, right? Yes, sir. So what is startup? Like a business idea which solves a problem which is not currently solved, which brings the innovation in the industry. Anybody else? What is startup? One answer is there. Correct answer. Anji. I think it's one that makes people like Yeah. Okay. Anji. Anji. Any idea which leads to the ignition or initiation. Okay. Good. Anji. Anybody else wants to add something? Anybody wants to add something? Anji? Anybody? Earlier, startup was for innovation. So any new idea is to be developed by startup. But now to increase self-employment, government has added two more things into this the definition of startup. What are those two things? The other thing is scalability. If idea is good and it can be scaled upon, even then idea is old one, but you can scale up your business, then it is under the term of startup. The other thing is, the second thing which government has added is employability. So unemployment is there in India. To tackle this problem, what government has done is it has added another feature into startup definition. If any of the project is capable of generating good amount of employment, that is also covered under startup. So startup is innovation or scalability or employability. So this is our Prime Minister Narendra Modi's wording. So never dream of becoming something if you dream of doing something. So you
have to do something. Dreaming say you are not going to gain anything, you have to do, you have to perform, only then you can gain something. No? That is very true word. So, any business, what to talk about startup, even any business must have some legal, ethical foundations, only then you can grow. So, you have, what you have to do is, you have to avoid so many legal issues, you have to foster your success, you have to be successful in the business, you have to cater to so many persons, investors, your employees, society. So you must have some of the things which can be termed as legal or ethical foundations. So India is the world's third largest startup hub. You know this thing? And by the 15th of March 2025, DPIIT, Department of Industry and Internal Trade, what it is dealing with? It is dealing with registration of startups. As per the data available with this department, 1.59 lakh successful startups are there in India. Or India is having 26 unicorns. Unicorns क्या होते हैं? What are the unicorns? Sir, startup which leads to the 100 crore. Oh, net good. worth. So that means you can name any of the startups which are very good in India. Physics wala. Physics वाला, हाँ जी, physics वाला से ही कल Delhi government has inked a pact to teach students of Delhi government, of Delhi state. हाँ जी, any other? Zomato, very good. Flipkart, it is also very good. Any other? Ola, Zepto. Zerota, all these are startups. You see, what is the qualification of Nilesh, Zerota person? What is the qualification? Not even graduate. Earning how much? In crores. Because of his vision, because of his thought, because of his knowledge. So he has ventured into a different thing and now he is successful. So we have already covered, earlier we were talking about innovation, now it is scalability and other thing is employability. So what is the criteria to be called a startup? So criteria is 100 crores of turnover, number one. Okay, ji? So but for the purpose of driven by technology with intellectual property rights. What is intellectual property? क्या होता है? What is intellectual property? तो हम आगे कवर करेंगे, ठीक है जी? And the organization or entity should be a new one. You see, old, it should not be converted. It should not be a entity which is converted from the old one or restructuring of the old one. It should be a new one. And the third thing is that business should not have completed 10 years of business. The moment it has crossed 10 years of business, then that is ceased to be a startup. Okay? These are the preconditions for startup. So, what is the legal entity of startup? मैं कोई भी business चला रहा हूँ, can I be called as startup? Then what type of entities should be there for any startup? It should be a company, private company registered under Companies Act 2013. It should be a registered partnership concern, or it should be a limited liability partnership. Why so? Why these? Why not other things? Why this restriction is there? We must have any of the three entities, only then it is be called as startup. Why so? कोई thought है आपके mind में? Why so? Legalities. हाँ जी? Sir, legalities अगर करूँ. Legality is there, transparency is there. The main focus is of transparency. So once a startup is registered with DPIIT, government is giving funding to that organization, so there must be some transparency. So once we are having this type of legal structures, so we are filing returns over there with the different authorities. So then what is there? Transparency will be there in the working of the concern. So this is the ecosystem. What is startup? This is the what we have done is this is covered over here. Okay, ji? This is the startup basically. Have you seen some startup? Can you
Name any of the startup? I just give you an example. आप लोग शादियों पे जाते हो, शादी के फंक्शन पे जाते हो, तो what we do is हम वहाँ पे ना क्या करते हैं, हम वहाँ पे खाना खाते हैं, हमने क्या किया, चाट खाया, चाट खा के हमने क्या किया, वो जो हमें प्लेट मिलती है, जो हमें कटोरी सी मिलती है, हम उसको क्या करते हैं, खा के फेंक देते हैं। तो कई बार वो प्लास्टिक की बनी होती है, एंड समटाइम्स इट इज ऑफ पत्ता, लीव्स, ठीक है ना, और समटाइम्स मे बी ऑफ सम अदर मटेरियल। और जो वाटर बॉटल क्या होती है, वो प्लास्टिक की होती है। वाटर बॉटल कौन सी होती है, 200 ml की वाटर बॉटल इज ऑफ प्लास्टिक। तो प्लास्टिक हाउ इट मैन्युफैक्चर्ड, कुछ ना कुछ तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट रहते हैं ना उसमें, ठीक है। तो दैट इज नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ, बिकॉज प्लास्टिक जो प्लास्टिक है ना, जब भी वो सन की कांटेक्ट में आएगा तो डेफिनेटली उसमें हार्मफुल रेज आएंगे। तो वन ऑफ द पर्सन वाज देयर इन द मैरिज फंक्शन एंड ही वाज कंज्यूमिंग टिक्की एंड ऑल द स्नैक्स जो भी थे। तो उसके मन में एक आइडिया आया, उसने कहा भी ये क्या चीज़ है भाई, यहाँ इतना सारा ये अपना ये प्लेट्स, ये कटोरीज इकट्ठी हो रही हैं, तो इतना गंद आ रहा है, तो व्हाट टू डू विद दिस। तो उसने एक आइडिया लिया। उसने आइडिया क्या किया, उसने ये आइडिया बनाया उसका कि उसने ये कहा कि क्यों ना हम ये प्लेट, ये कटोरी ऐसी हो कि वंस वी कंज्यूम आवर स्नैक्स, तो साथ ही साथ हमारी ये जो प्लेट कटोरी है ये भी कंज्यूम हो जाए। और ये जो वाटर बॉटल है, तो हम जैसे ही वाटर पिए साथ में बॉटल खा जाए। आप देखो ना वेस्टेज कितनी कम हो जाएगी। वरना देखो ना वो क्या होता है, इतना सारा बॉटल इकट्ठी हो जाती हैं, प्लेट्स कटोरीज इकट्ठी हो जाती है, तो उसको डिस्पोजल भी तो एक प्रॉब्लम है ना। अल्टीमेटली प्लास्टिक की बोतल्स को आप अगर कहीं पे भी स्टोर करोगे, कहीं पे भी इकट्ठा करोगे, तो कहीं ना कहीं तो इन्वायरमेंट को प्रॉब्लम तो हो ही रही ना कुछ ना कुछ। तो उसने क्या किया, उसके ऊपर वर्क किया। तो अल्टीमेटली ये केम आउट विद द आइडिया ऑफ हैविंग मिलेट प्लेट्स विद मिलेट एंड बोटल्स विद मिलेट। कि आप मिलेट की बोतल है, उसमें ऐसा उसने रख दिया कि जब आप उसको टेस्ट करोगे, आप उसको यू आर गोइंग टू स्टार्ट ईटिंग, तो आपको बड़ा ना अच्छा लगेगा। तो उसने उस तरह की बना दी। आज उसका जो आज उसका टर्नओवर है वो बहुत बढ़िया है, एंड ही इज फॉर द लास्ट 4-5 years ही इज नॉट एबल टू कंप्लीट हिज ऑर्डर्स। उसको इतने ज़्यादा ऑर्डर्स आ गए हैं कि उस ऑर्डर्स को वो कंप्लीट ही नहीं कर पा रहा। ठीक है जी। एक दूसरा सेकंड एग्जांपल, लास्ट एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। स्टार्टअप का आपने देखा होगा, आपके पास जो भी वेस्ट पेपर होता है, जो वेस्ट मटेरियल होता है, आप क्या करते हो, उसको सेल करते हो। किसको सेल करते हो, रद्दी वाला को। ठीक है। तो एक वन पर्सन वाज देयर, उसके फादर जो हैं वो साइकिल पे जाते थे रद्दी को सेल करने बिहार की बात है। तो बिहार में थोड़ी गर्मी ज़्यादा पड़ती है एज कम्पेयर टू आर इंडिया। तो हुआ क्या, तो वो देखा कि उसके फादर जा रहे हैं, तो वो जाते हैं बेचारे, साइकिल में जाते हैं, टूटा हुआ साइकिल है, बेचारे सुबह से शाम तक काम करते हैं, बड़ी मुश्किल से हमारी अपना जिंदगी चल रही है। तो उन्होंने बड़ा एक सोचा, उसके बात क्या है, हमने स्टार्टअप की बात की थी, क्या किससे होना चाहिए, टेक्नोलॉजी ड्रिवन। तो उसने क्या किया, दिल्लीवाला.com में एक साइट बना दी। उसने सभी मटीरियल, जितना भी वो स्क्रैप इकट्ठा करते थे, पूरे स्क्रैप का ऑनलाइन रेट डाल दिया। ठीक है जी। ऑनलाइन रेट डाल के उसने क्या कर दिया, उसने एक वैन बाय कर ली। तो वो रेट होता था, ऑनलाइन रेट आता था। अगर मैंने अपना स्क्रैप सेल करना है तो मैं क्या करूंगा, साइट पे देखूंगा रेट क्या है, उस रेट से वैन को तो मैं कॉन्टैक्ट करूंगा पर्सन को, वैन आएगी, मैं डालूंगा वेबसाइट पे कि मैं आई वांट टू सेल माय थिंग्स। वैन आएगी, उसमें वैन में इलेक्ट्रॉनिक वेइंग स्केल होगा, वो मेरा स्केल से वो मेजर करेगी कितना क्वांटिटी है मेरी, उस हिसाब से मुझे पेमेंट हो जाएगी। अब क्या हुआ, उसका बिजनेस बढ़ गया, नंबर 1। और नंबर 2, उसके फादर को साइकिल पे नहीं जाना पड़ा, और आज वो करोड़ों की टर्नओवर कर रहा है, जो कि पहले सिर्फ एक दिन में उसके फादर मुश्किल से 200, 500, 700 या 1000 कमा लेते होंगे, आज वो करोड़ की टर्नओवर कर रहा है। सो बात क्या है, ओनली डिफरेंस इज ऑफ थॉट, विजन। ठीक है। इफ यू आर हैविंग विजन, यू कैन डू एनीथिंग यू वांट टू। ठीक है। आज भी अभी हम यहाँ बैठे बैठे भी काफी विजन है हमारे, हम उसको वी कैन अचीव। सो स्टार्टअप में क्या है कि आपका एक आइडिया है, उस आइडिया को आपने क्या करना है, यू हैव टू क्लिक दैट आइडिया विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, और साथ में हमें आईपी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स भी हमें साथ में उसके प्रिजर्व करने हैं। क्या होते हैं हम आगे को बताएंगे। तो पहले वी आर गोइंग फॉर लीगल फाउंडेशंस, हमें क्या लीगल कंप्लायंसेस देखने हैं फॉर स्टार्टअप। तो सबसे पहले बात क्या है, हमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी देखना है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्या होते हैं, आपके पेटेंट। व्हाट इज पेटेंट, मैंने आई हैव इन्वेंटेड समथिंग, इनोवेशन की मैंने किसी चीज की, तो दैट राइट शुड बी विद मी ना।
मेरा आइडिया, why anybody should steal that idea? तो the thing is कि whatever my idea is, that idea should be registered in my name. अब होता क्या है कि मैंने आइडिया ले लिया, बट आइडिया को मुझे रजिस्टर कराना इज वेरी एक्सपेंसिव. तो गवर्नमेंट ने क्या किया, मुझे 80% रिबेट दे दिया. अगर आई एम स्टार्टअप, अगर मैं स्टार्टअप हूँ, तो मैं, अगर मेरा कोई पेटेंट है, मेरा कोई आइडिया है, अगर उसको मैं रजिस्टर करना चाहता हूँ, मैं अपने नाम पे आई वांट टू रजिस्टर, तो इन दैट केस व्हाट आई हैव टू डू इज आई हैव टू पे ओनली 20% ऑफ द टोटल अमाउंट ऑफ फी. सो मुझे 20% फी पे करनी है, 80% का मुझे रिबेट मिलेगा. द अदर थिंग इज ट्रेडमार्क्स. ट्रेडमार्क, व्हाट इज ट्रेडमार्क? ट्रेडमार्क इज द योर नेम ऑफ योर एंटिटी. ठीक है. अब क्या है, आपने देखा जोमैटो एक नाम बन गया, स्विगी एक नाम बन गया. मैं कल को क्या जोमैटो के नाम पे कहना है बिजनेस? वो कहते हैं नो, वंस यू आर इनटू स्टार्टअप यू मस्ट रजिस्टर योर ट्रेडमार्क विद द अथॉरिटीज. तो आपको ये हम व्हाई व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट कि इन केस ऑफ स्टार्टअप्स हमें टेक्नोलॉजी अलोंग विद इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करना है. तो आई एम बेसिकली रजिस्टरिंग माय नेम, आई एम रजिस्टरिंग माय नेम विद द अथॉरिटीज सो दैट नो वन एल्स कैन यूज माय नेम. जोमैटो का आज की नाम बन गया, ओयो का आज की डेट में नेम इज देयर. ठीक है. देन अब जीरो का वन नेम इज देयर, ग्रो इज नेम इज देयर. सो उस नेम को प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट इज हेल्पिंग स्टार्टअप इज टू गिव 50% कंसेशन इन द फी. सो अगर मैं अपने ट्रेडमार्क को रजिस्टर करना चाहूंगा, तो मुझे क्या है, वट एवर द फी इज, उसका ओनली 50% आई हैव टू पे, 50% विल बी बोर्न बाय गवर्नमेंट. ठीक है. सो ये एक स्टार्टअप को इंसेंटिवाइज करने के लिए एक इन्होंने ये कर दिया. उसके अलावा कॉपीराइट्स. कॉपीराइट क्या होता है? व्हाट इज कॉपीराइट? सर वो कुछ राइट्स होते हैं कि कोई दूसरा, मतलब बुक आपने लिखी, यू हैव रिटन अ बुक, आपने एक मूवी बनाई, तो उसको कोई रीमेक ना कर ले, रीप्रिंट ना कर ले, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए व्हाट द थिंग इज कॉल्ड कॉपीराइट. सो व्हाटएवर योर ओरिजिनल वर्क इज, that will be registered in your name, nobody can copy that thing, that is called copyright. और trade secrets क्या होते हैं? कोका कोला everybody was consuming कोक. क्या है कोक में? क्या है कोक में? कोक, what is there in the coke? किसी को नहीं पता. Only 4 people in the world are aware of the thing कि कोक का कंसंट्रेट में what the things are. ठीक है. पूरे वर्ल्ड में कोक जब बनता है, कोक का ओनली आपके पास कंसंट्रेट आता है. उसमें जो भी लोकल बोटलिंग प्लांट होगा, व्हाट बोटलिंग प्लांट इज डूइंग, इट इज मिक्सिंग लोकल वाटर विद द कंसंट्रेट. तो आप देखोगे अगर आप कोक कंज्यूम करोगे ना, तो चंडीगढ़ में टेस्ट डिफरेंट होगा, अमृतसर में डिफरेंट होगा. रीजन पानी का डिफरेंस है, लेकिन कंसंट्रेट सेम रहेगा. ओनली 4 or 5 पीपल आर देयर हु आर बेसिकली अवेयर ऑफ द थिंग कि उसमें कंसंट्रेट क्या है. अगर सभी को पता होगा तो कोक की नकल कोई भी कर लेगा ना. कॉपी करना तो वेरी इजी, और इंडिया में तो कॉपी करना ही बड़ा इजी है. सो कोक का जो भी आज की जो भी फॉर्मूला है, उस फॉर्मूला इज नॉट नोन टू एनीवन एक्सेप्ट द 4 मेन टॉप ब्रॉस. नोबडी एल्स इज अवेयर ऑफ दैट. दैट इज कॉल्ड ट्रेड सीक्रेट. सो द फर्स्ट थिंग इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, compliance with labor laws. Whenever we are into business, we have to take care of our employees, our workers. ठीक है. तो we have to have some labor laws. Just like once we commence any of the trading, so first thing is we have to register with Shop and Commercial Establishment Act. We have to register with that authority. ठीक है. Then there are Minimum Wages Act, Factories Act, ESI Act, Provident and Miscellaneous Act. So Maternity Benefit Act. There are so many things. अब Maternity Benefit Act क्यों लाया गया? Because now females are out of their home. Now they are recognized workforce. तो financially they are very stable, they are educated. तो आपको घर से बाहर आएंगे. तो जब when they are in the verge of maternity, तो उनको रेस्ट चाहिए. तो 26 weeks का गवर्नमेंट ने उनको पेड लीव दी है. तो every startup has to adhere to these norms. ठीक है. तो उनको 26 weeks की पेड लीव मिले. तो बेसिकली क्या है कि उसमें आपको लेबर लॉज को, सभी तरह के लेबर लॉज को एडहेयर करना है, आपको मीट करना है. ओनली देन यू कैन बी अ गुड स्टार्टअप. देन फेयर कंपनसेशन मिलना चाहिए. इफ 2-4 एम्प्लॉइज आर डूइंग सेम टाइप ऑफ वर्क,
So they should be given same remuneration, similar remuneration. There should not be any discrimination. अब इसमें क्या है? What is the benefit to these startups as far as labor laws are concerned? So there are 9 labor laws where government has given relaxation to the startups. तो उसमें उन्होंने क्या किया कि first year में there will be no inspection of any of the startups. वो जो भी self certified returns fill करेंगे, that returns will be accepted as an aware basis. So no question will be asked on that. Next 2 to 5 years, what will be done? Self-certified returns will be there, and if there be any concrete complaint with proper disclosure of name, if somebody is complaining, only then inspection will be there. Otherwise, no inspection on its own will be done by the government. So this has been given. This protection has been given to 9 labor laws, which basically deal with migrant labor, building workers, and all. So these are the some benefit to the startups. Data protection and privacy. Data protection is one of the data is the major tool nowadays. You are all using your mobile. Yes. You are restricted with so many apps, and every app functions only when you allow with some permissions. If you say the location permission you are not going to grant, app will not run. If you are not going to allow permission of contacts, it will not run. So what it is doing? It is basically fetching all your data, and data is the main tool in the years to come. What is happening today? America is having all the information of each and every person. Even what to say about our noble people, even raw people, army personnel, air force, everybody is facing this threat. You just talk about something. आप बात कर रहे हो clothes की, you are talking about some shoe, and you see after some time on your Gmail, on your mail, ads will start up coming about the Meesho or let it be Flipkart, Amazon or something else. You talk and they are sensing your mobile is always with you. So whatever you are talking, your mobile is capturing. So don't think your talks are in private environment. Privacy is maintained. No privacy nowadays. So data protection is one of the basic needs nowadays. So what data is? Data is the main thing on which you are working. So if my data is, suppose I am a CA by profession, I am auditing the accounts of some of the let it be organization, some trade organization I am auditing. He has given me some of the informations. That it is my duty to protect that very data information. If I pass on that information to one of the competitors, what will happen? Competitor will get the benefit of that thing and loss will incur to my client. So data protection is very important. So all the startups should take care of all these things, and data protection should be taken care of. And privacy of every information should be there. For that, Information Technology Act 2000 is there in India, which is working. And if there be any of the breach of data, then harsh punishment and penalties are there. So to avoid all these things, one must avoid these penalties. And then this is big loss to your reputation. ठीक है, हुआ क्या था? HSBC सुना ना? HSBC का डेटा, क्रेडिट कार्ड्स का डेटा चोरी हो गया था. Somebody stole the data of creditor holders. So creditor holders were, you can say, HNI customers, high net worth individuals are there. Data was stolen by somebody, and that was sold to some competitor. And you must have noticed, within 1 day, 25% down was there in the share of HSBC. And HSBC has to struggle, was supposed to give clarifications that we have already taken care of all these things, and in future this will not happen. We have taken strong policies and all these things so that it should happen in future. Ethical.
it was legal. Now we are talking about ethical foundations. What is ethic? What is ethic? Moral values. Moral values. हाँ जी, ठीक है. Ethic is your moral value, your conduct. So it is basically not governed by any law, but the thing is, you should. It is expected that you should respect your teachers. You should respect your parents. You should give love to your elders, your subordinates, your employees. All these are ethics. It is not basically law forced things. Integrity and transparency. So the thing is कि integrity is a must for every of the business. अगर integrity नहीं होगी तो business will not run. ठीक है जी? और what is transparency? Transparency is whatever you are doing, it should be transparent. There should not be any secret formula by which you are basically defrauding the public at large. Okay? So it is basically expected from all the startups that there must be some type of integrity in the business and there should be transparency so that public at large should not be taken to task. Okay? So the thing is, for what it is helpful, building trust. If the organization is trustworthy, if the organization is transparent, then public will like to deal with that very organizations. So trust will be built by that concern. Then investors, that whatever is there. If I am going for a startup with a private limited company, I have to file returns with MCA, Ministry of Corporate Affairs. So what I have to do is every year I have to file 2 returns with MCA. One is AOC 4, that is मुझे अपना क्या देना, balance sheet and statement of profit loss account देना, मुझे अपनी financial statements वहाँ पे MCA को I have to file. And the second thing is मुझे return, annual return file करनी है कि पूरे in the last year what I have done. Or in that case, anybody who wants to deal with my concern, he can go to MCA site, pay a nominal fee, and then what he or she can do is they can see my records. If they want to invest with me, they have to business. If they want to invest in business with me, so then what they will do? They will go to MCA site, pay nominal fee, and see all my credentials. If they are satisfied with my credentials and transparency is there and integrity is there, then what they will do? They will transact with me. Otherwise, nobody will transact with me. Then how will I run my business? So integrity and transparency is required in this case. Corporate social responsibility. I am earning from whom? From the society. I am earning from the society at large. So I must pay back to the society also. ठीक है ना? If I am earning from the society, I should pay back to the society also. So the thing is, CSR is of 2 types. Environmental में क्या आता है कि I have to reduce pollution. ठीक है जी? Recycle material, मैं ऐसा material use करूँ which can be recycled so that कि unnecessary society को कोई problem ना आ जाए. आपने देखा होगा चंडीगढ़ में वो अपना कचरे का ढेर सुना है आपने? क्या? What is this? That is not eco-friendly. So that things should be taken care of. कि आपका unnecessary आपके कोई भी ऐसा आप pollution आप ऐसा material ना use करो जिससे pollution हो. You must act to reduce pollution. Recycle material you must use so that society at large you can have good environment to give them. The other thing is ethical. What is ethical? Ethical means whatever your customers are, you should treat them in a fair manner. ठीक है? ये नहीं है कि अगर आपके कस्टमर बेस बढ़ गया, nowadays what is happening? If you are having Apple phone, you are having Android phone. So if you are looking for a room in a particular hotel, if you are having Apple phone, they will give you more rate, and in Android phone, they are giving low rates. So this is unethical. So that means fair treatment to the customer should be there. Whatever the thing I am using, whether I am using Apple phone, I am using Android phone, there should not be any discrimination. So the thing is ethical meaning thereby कि fair treatment to all your customers. If your employees are working for you, if there be any loss to employee in the due course of business with full of their integrity, then you must compensate your employees. Ethical duty of yours. If in discharge of their duty,
with due regard to the duty, if they are incurring any loss, you must compensate your employees if there be any loss to the employee, and you must give due respect to your investors, to your customers. ठीक है? These are called corporate social responsibility. Fair competition. अब what is competition? What is competition? When some other person is engaged in same type of business as Very yours. Like you must have seen Coke and Pepsi. So जब when Coke was official sponsor of one of the world games, Olympics, then Pepsi started campaign. Nothing official about it. So the thing is, what Pepsi and Coke are doing, they are trying to hire ex-employee of Coke, and Coke will try to hire ex-employee of Pepsi, just to have their planning knowledge. What they are planning, so to have inside knowledge. So what they are doing is they are indulging in this type of practices. So this is not a good practice. So competition law is there. In that competition law, there should not be any unfair competition. Healthy competition should be there and should remain there. But unhealthy competition should not be there. So if there be unhealthy competition, then penalties are there, prosecutions are there. Sustainability. What is sustainability? Anji, sustainability, what is this? Environmental, social responsibility into all aspects of business. If you incorporate all these things into your business, then it is called sustainability. Then for long your business will sustain. It will your vision will make your business survive. So you must have some type of sustainable practices. तो अगर if you are having sustainable practices, तो उससे आप carbon footprinting you can reduce. Suppose there is a brick kiln is there. तो उसमें क्या होता है? Smoke is there. तो अगर वो smoke को क्या करें? उसके लिए वो क्या करें? कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट लगा ले जिससे वो स्मोक जो है वो कम एमिनेट हो. तो वो भी क्या है? आपका एक उसमें क्या होगा? आसपास के लोग क्या करेंगे? आपसे तंग नहीं होंगे और आपको तंग नहीं करेंगे. तो एनवायरनमेंट भी सेफ होगा. तो आप लॉन्गर पीरियड के लिए, जब तक कि वहाँ पे लैंड पे बिग क्लिन को रन करने का पोटेंशियल है, तब तक आप रहोगे. तो उसके लिए आपको सस्टेनेबिलिटी के लिए क्या है? आपको सारा देखना पड़ेगा. अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी साथ में अपना मैच करना पड़ेगा. स्टेक होल्डर्स कंसिडरेशंस. अब स्टेक होल्डर्स कौन होते हैं? एम्प्लॉइज भी होते हैं, इन्वेस्टर्स भी होते हैं, ठीक है, और कस्टमर्स भी होते हैं. तो अगर आपने उनका ट्रस्ट विन कर लिया, तो आपको ग्रोथ में easiness हो जाएगी. तो you can run your business in a proper way. So you must take care of stakeholders' considerations. Legal and other considerations. ठीक है? तो in every business, legal considerations are there. So in startup, basically you people are not having any business background and you are venturing into something. So there must be some complex regulations like GST है, income tax है, GST है, लेबर लॉज हैं. अब यू आर नॉट हैविंग नॉलेज, तो वहाँ पे आपके लिए ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहाँ पे आपको इनवैल्यूएबल गाइडेंस मिले, ठीक है, जिससे कि यू कैन रन योर बिजनेस इन अ प्रॉपर वे. ठीक है जी. सो कल को कोई डिस्प्यूट हो गया, एम्प्लॉय के साथ डिस्प्यूट हो गया, इन्वेस्टर के साथ डिस्प्यूट हो गया, कस्टमर के साथ डिस्प्यूट है, तो उसको रेजोल्यूशन का मैकेनिज्म हो. आपको फंडिंग चाहिए, तो इनक्यूबेशन सेंटर्स होते हैं, फंडिंग होती है. वो किस लिए होती है? स्टार्टअप की. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको दे रही है ना कि अगर आप सीड मनी देती है 4% के रेट पे कि वो आप रन करो, तो वो फंडिंग क्यों दे रही है? टू हेल्प यू ग्रो योर बिजनेस. तो ये इस तरह की लीगल और अदर कंसिडरेशन शुड आल्सो बी देयर इन द स्टार्टअप एनवायरनमेंट. एनी क्वेश्चन? एनी क्वेश्चन यू वांट टू आस्क? थैंक यू वेरी मच.